Good morning, sir. So you are not audible if you are speaking. Good morning. You're asking something? No, no. Okay. So let us start with. We'll go to the last part of the topic, that is NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy. We have finished infrared spectroscopy. I have given you around 30 questions. Kindly go through that. And if you face any difficulty, you can ask me, but I think all questions you can answer. Okay. So coming to NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy. Already in the introduction class, I have given you certain idea about this nuclear magnetic resonance spectroscopy. Here, this is something different from electronic spectroscopy. Electronic spectroscopy uh, is dealing with excitation of electrons or transition of electrons. But nuclear magnetic resonance spectroscopy is actually deals with the nuclear spin states. So it is very easy to understand with respect to a proton. What is a nuclear spin state? Because uh, first of all, let's look into proton. Then we can extend our idea to other nuclei also. Why proton? If somebody put you a question, then we can say that in organic compounds, two elements are the most abundant element. One is carbon and the other one is hydrogen. So proton is actually the hydrogen nucleus. You can say this is actually the hydrogen nucleus. So if you take a sample of compound, means a sample, organic compound sample, you will be having lots of protons in that. Definitely, if you take 1 mole of sample, then millions of protons will be there. And what you expect, all protons are not expected to have the same spin. That means protons, like electrons, they rotate about their own axis, and because of the rotation, they create a magnetic field. And these protons are actually randomly oriented. The protons are actually randomly oriented. In a sample, all these protons, whatever protons are there, their spins are randomly oriented. Try to understand my point. But if you put a magnetic field here, if you put a magnetic field, what happens? Uh, all these randomized protons or spins, they get regularized. Okay, regularized means some of the protons actually uh, arrange their magnetic fields or spins in such a way that the magnetic fields remain um, along the applied field. And another extreme case is some of the protons align their spins in such a way that the magnetic field exactly opposes the applied magnetic field. Try to understand my point. Here the spin is random, but when you apply a magnetic field, there is a uh, regularization. And what I say, some of the protons have their spins oriented along the field, and some of the protons have their field oriented opposing to the field, thereby leading to the formation of two states, two spin states. One is your plus half. This state is known as alpha state, or with spin plus half, and this is known as beta state with spin minus half. That means actually protons have two spin states, plus half and minus half. In the absence of magnetic field, these two spin states have same energy. Means if the same phenomenon is represented by a energy level diagram, then we can show both these spin states, that is plus minus half, they are having same energy in the absence of magnetic field. But when the magnetic field is applied, these spin states, the degeneracy is removed, and we are going to get two different spin states, alpha and beta. So this is aligned to the field, and this is opposing to the field. Try to understand the point. This is known as nuclear spin state, which is
identified as I. I stands for nuclear spin state. The nuclear spin state of proton, they are actually degenerate. They have same energy in the absence of magnetic field. But when you apply a field, the degeneracy is lifted. Okay. And the energy gap is created between the two states. This energy gap is definitely very small. And if you give a very strong magnetic field, you are going to get a appreciable energy gap. Okay. With a weak magnetic field, you are not going to get appreciable gap. So, in a strong field, we get a appreciable energy gap between the nuclear spin states. Now, you can put a resonating energy uh, using some using some electromagnetic radiations. I'm very sorry, electromagnetic radiation, and this energy is very small and available in the radio frequency. Okay. So, this is the lowest energy radiation in the complete electromagnetic spectrum. But this low energy is enough to have this transition from alpha to beta. Means we can have a flipping of proton. Okay, we can make a proton spin change, that is from clockwise to anti-clockwise or from aligned field to the opposing field. Just 1 minute. Brother. Hello. I'm class ରେ ଅଛି ତ emergency. ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସାରେ କହିବି ତ okay. So do you understand up to this? Yes, sir. So proton has two nuclear spin states, plus half and minus half. In the absence of magnetic field, they are degenerate. In the presence of magnetic field, the degeneracy is lifted and we are going to get two spin states. And once this energy gap is created by application of magnetic field, you can put radio frequency to have a transition from one spin to another spin level. Okay, so this is actually known as flipping of proton. Flipping of spin, we can say. This is different from the nuclear electronic transitions from one ground state to excited state. Okay. So here two things you have to do. First of all, you have to create the energy gap between nuclear spin states, and second thing is that you have to put the radio frequency to have the flipping. Okay. So depending on the energy gap, you have to decide the frequency. Energy levels are actually quantized, so a specific frequency energy will be required to have the flipping. Okay. Now, next thing is that whether all nuclei will have different nuclear spin states, that also you have to decide. Like proton, is there any other nuclei which you can study in NMR? So that you can understand, any nucleus with nuclear spin quantum number not equal to 0 can be seen in NMR. तो कोई भी न्यूक्लियस जिसका आपका spin quantum number is not equal to 0, then we can see. Okay, so how to know that spin quantum number is equal to 0 or not equal to 0? That is very easy. You can look into the atomic number and mass number. Okay, कोई भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आप चेक कर सकते हो. अगर दोनों आपका even ho, if both the things are even, then I is equal to 0. Okay, and if any one is odd or both odd, then I is sorry. If both are even, then I is equal to 0. Means such nucleus you cannot study. Any one is odd or both are odd,
then I is not equal to 0, and we can study that particular nucleus. Okay, so this is the selection rule actually, how to know that which nucleus is NMR active. तो कोई आपको अगर बोलता है कि कार्बन 612, कैन यू टेल मी, कैन आई विजुअलाइज कार्बन 612 in NMR? Yes, sir. Yes, because you see the atomic number and mass number both are even. तो इसका तो I is equal to 0 है. Can you see that? Yes, sir. Yes, yes or no? मैं क्या बोला आपको? I should not be equal to 0. I 0 नहीं होना चाहिए. So not sir नहीं आएगा ना फिर NMR में. That is what I'm saying. This Yes. is not NMR active. Means carbon 612 you cannot see, but carbon 613 can you see? Yes. Carbon Yes, sir. 613 we can see because I is not equal to 0. So you can check it. I will give you a list of nuclei where I is equal to 0 and I not equal to 0. But identify करने के लिए आपको देखना है only कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों में से कोई एक ऑड होना चाहिए या दोनों ऑड होना चाहिए. ऑक्सीजन 816 we cannot study. सल्फर 1632 we cannot study. तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर अगर दोनों इवन हो जाता है then the I becomes equal to 0 and we cannot visualize such a nucleus. But okay, organic compounds के लिए कार्बन 13 and प्रोटॉन, these two NMRs are very very important. And हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे that all discussion will be pertaining to proton only. तो प्रोटॉन के साथ ही हमारा डिस्कशन होगा, and you can say whatever we are discussing that is actually proton NMR. We are interested in proton NMR. Okay, तो हम प्रोटॉन को ही देख सकते हैं यहाँ पे. अच्छा, और एक चीज मैं बोल देता हूँ, ये जो एनर्जी गैप हम क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करके, दिस एनर्जी गैप इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप दोगे उतना ज्यादा आपका एनर्जी गैप क्रिएटेड होगा. Try to understand my point. That means more strong is the magnetic field, more will be the energy gap between the spin states. Okay, so there is a equation known as Larmor equation that actually mathematically you can get the relation E is equal to that some constant will be there, that is gyromagnetic ratio, and other some constants will be there into actually the magnetic field strength. Some h by 2 pi factor is there, but I don't think that you remember this. Rather, you can just remember this equation that energy gap is proportional to magnetic field. Okay, so gamma h by 2 pi into b naught, that is a Larmor equation, famous equation. But everything is constant except the magnetic field. So more is magnetic field, more is the energy gap. And any energy gap, as usual, you know, that can be also expressed as h nu. So this frequency, radio frequency nu will be required to have this flipping of proton. Okay, so this much. Let us look into the slides. I will be sharing the slides with you because the whole topic I am going to discuss with slide. So NMR spectroscopy works by allowing somebody to see the nuclei in a molecule as well as the chemical neighborhood of those nuclei, which helps to establish the structure of the molecule. What the theory says, NMR में हम एक particular nucleus को हम देख सकते हैं and nucleus का environment भी देख सकते हैं. Okay, एक example आपको बोलता हूँ so that I will come back to the discussion. आप बोलोगे, देखो, suppose I have an organic compound like ethyl alcohol. You see, in ethyl alcohol, there are 6 protons
and all protons can be visualized. Okay, so if you see the protons closely, what do you think? All these protons have same chemical environment? Is it? The chemical environment of these 6 protons are same? No, sir. Definitely different. This proton is attached to oxygen directly, and oxygen is a highly electronegative element. These protons are attached to carbon. These protons are also attached to carbon, but the distance you can mark from the electronegativity element. And you know electronegativity is actually propagates along the chain. Though after 2 carbon atoms it may be negligible, but it propagates along the chain. So as per the impact केमिकल एनवायरनमेंट अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोटॉन है इसका एनवायरनमेंट इज समथिंग डिफरेंट देन दीज 2 प्रोटॉन्स बी एंड देन दीज 3 protons, let's say C. That means there are 3 different types of protons in this particular compound with ethyl alcohol. Similarly, in any organic compound, you can distinguish different types of protons. Okay, so NMR actually helps not only to see the protons but also the chemical environment of the proton. तो NMR में आप अगर देखोगे तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है आपको डिफरेंट सिग्नल्स NMR में मिलेगा. दैट मींस NMR सिग्नल से आपको ये पता चल जाएगा कि 3 वैरायटी ऑफ प्रोटॉन है एंड एवरी प्रोटॉन का एनवायरनमेंट भी आपको पता चलेगा. दैट मींस ये जो बी प्रोटॉन है इसका जो एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन है, सी प्रोटॉन है जिसका एडजेसेंट नेबर में 2 प्रोटॉन है एंड ये जो ए प्रोटॉन है उसका नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है बिकॉज कार्बन तो डायरेक्टली अटैच नहीं है यहाँ पे. तो ये सब चीज कि ए प्रोटॉन का एनवायरनमेंट में कोई और प्रोटॉन नहीं है, बी प्रोटॉन का एनवायरनमेंट नेबरहुड में 3 प्रोटॉन है, सी प्रोटॉन का नेबरहुड में 2 प्रोटॉन है, ये सब भी आपको एनएमआर से पता चलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. कैसे पता चलेगा वो तो देखेंगे. तो यहाँ पे जो लिखा गया है एनएमआर के बारे में कि एनएमआर में आप एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस को देख सकते हो एंड इन एडिशन टू दैट उसका एनवायरनमेंट भी देख सकते हो, उसका नेबरहुड भी देख सकते हो. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर वी आर इंटरेस्टेड. ये न्यूक्लियस जो यहाँ पे लिखा गया है इसके जगह पे यू कैन जस्ट से दैट वी आर ओनली लुकिंग एट द प्रोटॉन. तो प्रोटॉन एंड इसका जो नेबरहुड, इसका जो एनवायरनमेंट है ये मैं देख सकता हूँ. ओके, सो अराउंड स्पिन स्टेट्स में आपको यहाँ पे लिखा गया है. ये सब चीज आप जानते हो. कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जो मूव करता है डेफिनेटली इट इज हैविंग ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विथ इट. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन गेट इट फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल. ओके, एंड मैं यहाँ पे बोला हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होगा, कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर इनएक्टिव होगा. तो वही प्रिंसिपल है, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ. I equal to 0 that is NMR inactive, I not equal to 0 that is NMR active. आप देख भी सकते हो टेबल में मैं फर्स्ट जो रो है वहां पे इवन में लिखा हूं. सो स्पिन क्वांटम नंबर इज 0, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, सल्फर 1632. ये सब आप रीड आउट नहीं कर सकते एनएमआर में, बट बाकी जितना है जहां पे न्यूक्लियर स्पिन स्टेट आइदर हाफ 3/2, हाफ 5/2, 1 सब आप देख सकते हो. हाइड्रोजन एंड कार्बन को थोड़ा मैं हाईलाइट करके रखा हूं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यू कैन सी नॉट कार्बन 12 दैट इज कार्बन 13. So that NMR is known as carbon 13 NMR. But we are interested in proton NMR only, where the spin is half. When the spin is half, total multiplicity is 2i plus 1 as usual. So 2 into half plus 1, that is 2. One is plus half, another is minus half. Similarly, अगर multiplicity आप निकालोगे for 3/2, so 3/2 means 2 into 3/2 plus 1, 4. What are the values? Plus 3/2, plus half, 0, minus half, minus 3/2. So plus 3/2 to minus 3/2 will be 4 values will be there, or 4 spin states will be there. You cannot say that every time 2 states होगा आपका. Okay, so depending on the quantum number value, you can have more multiplicity also.
proton में I is equal to half, therefore 2I plus 1 multiplicity is 2, so one is plus half, another is minus half. So two states are there in proton. But when I is equal to suppose 3 by 2, so 2I plus 1 will be what? 4, because 2 into 3 by 2 plus 1, 4. So that will be plus 3 by 2, then plus half, then 0, minus half. जीरो तो नहीं होगा ना, कितना होगा? 2 into 3 by 2 plus 1. 2 into 3 by 2 plus 1, 4. So that is minus half and minus 3 by 2. So 4 states are there. 4 nuclear spin states are there. So this is how you can design. So I is equal to 1 suppose. Then 2I plus 1, that is 3. 2I plus 1, that is 3. So that is plus 1, 0 and minus 1. So 3 states are there. Anyway, हमारा तो प्रोटॉन ही है, तो यहाँ पे 2 ही स्टेट है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, मैं आपको बोला था कि जो प्रोटॉन का जो स्पिन है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है. सेम चीज यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा आपको क्लियर एक व्यू देगा कि प्रोटॉन स्पिन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, when you put a magnetic field there, you can see that some of the protons align their spins parallel to the field, जो कि tick mark दिया गया है, and some of the protons have aligned their field opposing to the field. So that is your alpha state and this is your beta state. Two nuclear spin states are there. You can see that is plus half aligned and opposing. So this is alpha state and this is the beta state. This energy gap is actually created. And you can see, मैं आपको बोल रहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाओगे, this energy gap also increases, and this is a quantitative idea. You can see when the magnetic field is 1.41 Tesla, the energy gap here, and when the magnetic field is 7.05, the magnetic field has increased almost 10 times. Can you see that? Yes? Yes, sir. Okay. So same proton, but you are providing a strong field. Definitely the energy gap between alpha and beta state will be more. And here actually the field is zero. When the field is zero, both the states have same energy. मैं आपको बोला था. Magnetic field नहीं है means all the spin states have same energy. Once you put the magnetic field, the spin states will have different energy, and there is a possibility of flipping by putting the radio frequency. Okay. And ये जो Larmor equation मैं आपको बोल रहा था, gamma h by 2 pi into b naught, आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो. But this gives you a relation between delta E and b naught. You can see more is b naught magnetic field, more is the energy gap. And you can see when magnetic field is 1.41 Tesla, you see the energy gap is small. So radio frequency required for flipping is 60 megahertz. Okay. Try to understand my point. But when the magnetic field is 7.05 Tesla, the energy gap is too high and you have to provide a radio frequency, higher radio frequency, that is 300 megahertz. ये समझ में आ रहा है? थोड़ा क्वांटिटेटिव पिक्चर मैं आपको याद रखने के लिए बोल नहीं रहा हूं, थोड़ा एक माइंड में आइडिया आएगा कि व्हेन यू आर यूजिंग ए वीक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, आपका एनर्जी गैप कम है, सो लो फ्रीक्वेंसी में यू कैन हैव फ्लिपिंग, बट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, डेफिनेटली हायर फ्रीक्वेंसी विल बी रिक्वायर्ड. डू यू अंडरस्टैंड? यस, यस, आपको समझ में आ रहा है? तो हाउ टू गेट द एनएमआर सिग्नल ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं. You have to create the magnet, you have to create the difference of energy between the two spin states, and once the energy gap is created by application of magnetic field, you can put the radio frequency. Resonating frequency you have to give because energy levels are quantized, so exactly this frequency will be required
to have the flipping of proton. Okay. So ये जो different protons है, different proton will have different energy gap. Okay. Chemical environment is very, very important as far the energy gap is there. Therefore, you are going to get different signals for different protons. So थोड़ा इसको डिटेल हम देखते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बोलता हूं, हाउ द केमिकल एनवायरनमेंट इज कंट्रोलिंग द एनर्जी गैप. ठीक है, बट बिफोर दैट यू शुड नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा सो दैट एनर्जी गैप क्रिएट होगा. देन रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको देना पड़ेगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. अब देखो यहाँ पे तो दो वेरिएबल हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता था, एनर्जी गैप पहले होता था एंड यू जस्ट पुट द एनर्जी. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, इंफ्रारेड हो या यूवी विजिबल हो, आप डाल दो एंड ब्रिंग द ट्रांजिशन. बट यहाँ पे तो पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड देके ये एनर्जी गैप को क्रिएट करना है. जो प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ में, ये तो पहले एनर्जी गैप क्रिएट करना है. एनर्जी गैप क्रिएट होगा, उसके बाद आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी देना है. सो टू वेरिएबल्स आर देयर. So if I vary both the things, can I study the spectrum? It becomes very difficult. So normally जब हम NMR spectrum study करते हैं, any one parameter you have to keep fixed. That means you provide a particular radiomagnetic field to all the protons A, B, C. Do you understand? एक particular field आप तीनों प्रोटॉन को दो, definitely you are going to get different energy gaps for all the three protons. And then you put radio frequency, different frequency will be required to have the flipping of A, flipping of B, flipping of C. That is one option. Or you provide a particular radio frequency and vary the magnetic field. Either or, दोनों चीज पॉसिबल है. बट मार्केट में जितना कॉमन इंस्ट्रूमेंट आपका मिलता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स करते हैं एंड इसको हम वेरी करते हैं. इसलिए आप देखोगे, आपको अगर कोई पूछता है, आप जाके किसको पूछोगे सर आपके पास कौन सा एनएमआर है, लोग बोलते हैं मेरे पास जो एनएमआर है वो 600 मेगाहर्ट्ज का है. सो दैट मींस दैट हैज अ 600 मेगाहर्ट्ज सोर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी. मैग्नेटिक फील्ड तो हम वेरी करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एनएमआर को हम डेजिग्नेट नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम करते हैं. 600 मेगाहर्ट्ज एनएमआर, 400 मेगाहर्ट्ज एनएमआर, 800 megahertz NMR, like that. Okay, but both the things are possible. You can vary one parameter and keep the other parameter fixed so that you can study the spectrum more conveniently. अगर दोनों पैरामीटर को वेरी करोगे, फ्रीक्वेंसी भी वेरी करोगे, फील्ड भी वेरी करोगे, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट. ओके, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड. नेक्स्ट थिंग इज दैट when you are thinking of a proton, is it there without any electron cloud around it? Can you get a proton, bare proton without electron cloud? What do you think? प्रोटॉन के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So there must be electron cloud here. प्रोटॉन तो कभी आपको ऐसे bare नहीं मिलेगा आपको. So think this when you are having a proton here, here we are having a proton without electric cloud, electron cloud, and this is a proton with electron cloud. Now you are applying a magnetic field here and also here. What do you think? In both the cases, the proton is going to experience same magnetic field? From your common sense, you tell me. Definitely not. Because ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड will be also having a magnetic field.
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूवमेंट मोशन में होगा तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड नॉर्मली क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिंग डायरेक्शन में होता है। इसको हम बोलते हैं बी लोकल। लोकल मीन्स that is this is the secondary magnetic field created by the electron cloud, secondary magnetic field created by electron cloud around proton. Try to understand the very simple thing जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है टू द अप्लाइड फील्ड। बट यहाँ पे बेयर प्रोटॉन में ये तो नहीं है, लोकल तो कुछ नहीं है, जीरो है। So whatever field we are applying, everything is experienced by the proton. But real practice में क्या होता है, एक्चुअली जो इफेक्टिव फील्ड होता है जो कि this proton experiences, that is not exactly equal to the applied field. Rather, that is applied field minus the local. Do you understand what I am saying? Yes. Sir, can you please repeat? Can you please In explain? what do you expect? Protons तो आपका बेयर नहीं होगा ना। कोई भी प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कि नहीं? Yes, यस। sir. सो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मैं बात कर रहा हूं। इफ देयर इज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इलेक्ट्रॉन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? Yes, sir. And that magnetic field actually acts in the opposite direction to that of the applied magnetic field. इसलिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाता है ड्यू टू दैट लोकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस इज समथिंग लाइक शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता तो वट एवर मैग्नेटिक फील्ड यू आर अप्लाइंग, दिस प्रोटॉन इज गोइंग टू influence or experience the same field you are applying. But when the proton is along with electron cloud, आप देखोगे तो electron cloud actually shields this proton to some extent by generating a local magnetic field, and that local magnetic field you have to deduct from the applied field so that you can get the effective field. अभी समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? Yes, sir. तो इसी को हम बोलते हैं क्या ना, शील्डिंग। क्या बोलते हैं? शील्डिंग। ओके, तो दिस प्रोटॉन इज एक्चुअली शील्डेड प्रोटॉन। ओके, एंड यहां पे आप देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा आप देखोगे प्रोटॉन उतना ज्यादा शील्डेड होगा, एंड जितना शील्डेड होगा उसका जो इफेक्टिव फील्ड है उतना कम होगा। ये अगर ज्यादा होगा लोकल फील्ड तो ये कम हो जाएगा। Are you getting my point? तो शील्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ शील्डिंग आपका जो एनर्जी गैप यू आर एक्सपेक्टिंग वो कम हो जाएगा। अगर शील्डिंग नहीं होगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप जितना अप्लाई कर रहे हो सभी पूरा फील्ड को वो एक्सपीरियंस करेगा, एंड द एनर्जी गैप बिटवीन द स्पिन स्टेट्स विल बी मोर। अगर इफेक्टिव फील्ड कम हो जाएगा तो डेल्टा ई भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी में यू कैन हैव द क्लिपिंग। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? Yes, sir. तो आप थोड़ा अपना फंडामेंटल को, यही फंडामेंटल को यूज कीजिए एंड मुझे बोलिए कि ये जो इथाइल अल्कोहल था इसमें कौन सा प्रोटॉन आपका सबसे ज्यादा शील्डेड है? मींस कौन सा प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? So the carbon compound. बीच में जो डेफिनेटली, दोनों कार्बन है उसमें। क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इज नॉट इट? तो ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस ये प्रोटॉन के ऊपर तो बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ चला आएगा। ये जो प्रोटॉन होगा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपागेट्स अलोंग द चेन, therefore carbon is not very highly electronegative as compared to hydrogen, but ऑक्सीजन का इम्पैक्ट थोड़ा होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पूल होगा इस साइड में। बट एनीवे,
As the distance increases from oxygen, definitely inductive effect will decrease. So ये जो प्रोटॉन है, सी प्रोटॉन, बी प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, तो कौन सा प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा? यस, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ए प्रोटॉन के चारों तरफ होगा, बी या सी? सर आई गेस बी पे सी पे हो सकता है सर, आई गेस। यस, सी के ऊपर, क्योंकि सी के ऊपर ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस सबसे कम होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। एंड सबसे कम किसके ऊपर होगा? ये प्रोटॉन ए पर। समझ में आ रहा है? तो ये ना, इसमें कोई डाउट है? यस। तो यस समझ आ रहा है। which proton is actually shielded? ये this proton is shielded and this proton is actually de-shielded. इसको हम बोलते हैं de-shielded, SCHI, de-shielded. De-shielded in the sense इसके चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल देते हैं, हम कम कर देते हैं। सो जो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया उसको हम बोलते हैं de-shielded। जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसको बोलते हैं shielded। एंड ये तो इन बिटवीन आएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स से मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। यू सी, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट इसमें दो वेराइटी ऑफ प्रोटॉन है, ए वेराइटी एंड बी वेराइटी। ये तीन प्रोटॉन बी वेराइटी, ये दो प्रोटॉन ए वेराइटी। बट कैन यू टेल मी which is shielded and which is de-shielded? Shielded de-shielded actually relative term है। कौन सा प्रोटॉन de-shielded होगा यहां पर? यस, सर ए वुड बी de-shielded। exactly, A will be, this will be de-shielded because of the electronegativity effect of chlorine, and this will be relatively shielded. तो यहाँ पे for this compound you are going to get 3 signals in NMR, and for this compound we are going to get how many signals? 2 signals. 2 varieties of protons are there and 2 signals. That means आप थोड़ा सोचो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करूंगा सेम, लेट्स से 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में ये कंपाउंड में प्रोवाइड करूंगा, सो ये जो दो वेराइटी ऑफ प्रोटॉन है, दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेल्टा ई, इज नॉट इट? किसका ज्यादा होगा डेल्टा ई, ए का या बी का? सपोज मैं एक पर्टिकुलर 7 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोवाइड किया, ये दोनों में क्या सेम अमाउंट ऑफ गैप होगा, क्रिएट होगा स्पिन स्टेट्स में? सर डिफरेंट होगा सर। कौन किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा? ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा? डेल्टा ई किस में ज्यादा होगा? बोलो। सर मे बी बी पे ज्यादा हो सकता है क्योंकि ए de-shielded है एंड देन बी shielded है। नहीं, डीसिल्डेड होने से क्या होगा? डीसिल्डेड मींस इलेक्ट्रॉन अच्छा डेंसिटी कम है, तो देन ए पर हो सकता है फिर। हाँ, हो सकता है क्या? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक देयर। आपका लोकल फील्ड अगर ज्यादा होगा, इफेक्टिव फील्ड कम हो जाएगा ना। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन के चारों तरफ ज्यादा होगा, आपका एक्सटर्नल फील्ड का जो इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो इफेक्टिव फील्ड कम हो जाएगा, इफेक्टिव फील्ड कम होने से डेल्टा ई कम हो जाएगा। ओके, तो जो प्रोटॉन आपका डिसिल्डेड होगा वहां पे आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। दैट मींस डेल्टा ई, इसमें आप देखोगे ए में आपका डेल्टा ई जो है वो ज्यादा होगा। मींस A protons will experience more magnetic field. Deshielding means what? Experience higher
magnetic field. Do you understand? Yes, sir. Shielding means what? माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा है, वो शील्ड कर देता है, इंपैक्ट को कम कर देगा वो. ओके, तो डेल्टा ई का अगर बात करें तो ए ग्रेटर देन बी, इसलिए आपका अकॉर्डिंगली सिग्नल का पोजीशन होगा ना. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस ए प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए अगर डिसिल्डिंग होता है ना, तो ए प्रोटॉन को, इसका मतलब क्या है, ए प्रोटॉन को अगर आप फ्लिप करना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए देन बी. समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. सो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड. एंड हियर अगर आप ए बी सी देखोगे तो एनर्जी गैप कैसे आप ऑर्डरिंग करोगे? ये सर, फ्लिप करने के लिए आपने क्या बोला था? बी को ज्यादा चाहिए एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ए. आपका एनर्जी गैप किसमें ज्यादा है? ए सर, में. ए पे ज्यादा है सर. तो ए में अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो फ्लिप करने के लिए ए को ही ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए. हाँ, गॉट इट सर. बी को कैसे? आपका एनर्जी गैप जो है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ में, ये एनर्जी गैप तो डिसाइड करेगा ना रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए आपको. डू यू अंडरस्टैंड? सो मोर Yes, इज एनर्जी गैप, हायर इज द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड. ठीक है? यस, गॉट इट. yes sir. तो यहां पे क्या होगा? डेल्टा ई, आप सोचो, ये सबसे ज्यादा डिसिलेटेड है तो एनर्जी गैप ए में सबसे ज्यादा होगा, देन बी, देन सी. इज नॉट इट? यस. Yes sir. तो ये सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं ये सब छोड़ दीजिए, इंस्ट्रूमेंट छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए. सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का बात अभी अभी जस्ट मैं आपको कर रहा था कि जो प्रोटॉन है वो नॉर्मली बेयर नहीं होता है. आप देख सकते हो, आई हैव शोन यू ए बेयर प्रोटॉन हियर एंड दिस इज ए प्रोटॉन विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड इट. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोकल मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे थे. सो बी इफेक्टिव इज इक्वल टू बी अप्लाइड, जिसको बी नॉट में बोल रहा हूँ, माइनस बी लोकल. So whatever I have discussed, the same thing has been kept here, and you can see the result. अगर एक प्रोटॉन shielded हो जाता है, a shielded nucleus, you see, shielded means आपका जो opposing local field है वो उसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो, लार्जर मैग्नेटिक फील्ड है, बट एक्सपीरियंस्ड फील्ड स्मॉल हो जाता है. डिसिल्डेड अगर होगा तो लोकल फील्ड कम होगा एंड एक्सपीरियंस्ड फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा. तो ये एक बार समझ लोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट. एंड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई वाज डिस्कसिंग विथ यू दैट इथाइल क्लोराइड, जस्ट मैं आपको बोल रहा था ना, CH3 CH2 Cl. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स यू कैन सी. One is marked by blue, the other one is marked by red. Okay, so red is actually shielded, blue is actually deshielded. समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? एंड आप देख सकते हो रेड प्रोटॉन को आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, आप देखो रेड में एक्चुअली क्या है, दिस इज योर shielded ना. shielded means what? experienced field is less, तो लो फ्रीक्वेंसी में आपका रेजोनेंस होगा. एंड जो ब्लू प्रोटॉन्स है उसके लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए. यू कैन सी दिस इज द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन. सो दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे भी लिखा गया है, आप देख सकते हो. These protons sense a larger effective magnetic field, so comes to resonance at higher frequency. These protons sense a smaller effective field, so come to resonance at a lower frequency. समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? यस. Yes sir. तो एनएमआर का एक्चुअली अगर आप देखोगे प्लॉट,
हमने यूवी विजिबल का प्लॉट देखा, कैसे प्लॉट करते हैं यूवी विजिबल, आपको याद होगा, ऑब्जर्वेंस वर्सेस वेवलेंथ। सो हमने देखा कि किस टाइप का कर्व आपका आता है। देन आईआर का प्लॉट देखा, आईआर में परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर लेते हैं, एंड यू हैव सीन हाउ दिस आईआर ग्राफ इज ऑब्जर्व। एनएमआर का जो कर्व है, यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी लेते हैं, एंड यहाँ पे एक्चुअली वी प्लॉट केमिकल शिफ्ट। मैं आपको बोलूंगा इसके बारे में थोड़ा। इन पीपीएम यूनिट होता है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, एंड आपको एनएमआर सिग्नल इस तरह से दिखता है। ओके, दिखा भी है वहां पे, आप देख सकते हो, ये 2 प्रोटॉन, मैंने इस टाइप का सिग्नल आपको दिखता है। एक्चुअली एनएमआर का सिग्नल में आपको जो यहाँ पे दिखाया हूं, ये थोड़ा एग्जैक्टली इस तरह से नहीं है, थोड़ा उसमें ब्रेक हो, मीन्स सम पार्ट्स होता है, मीन्स सिग्नल्स एक्चुअली स्प्लिटेड सिग्नल्स होता है। बट टू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग वी कैन सी द एनएमआर सिग्नल्स आर ऑब्टेन्ड लाइक दिस। ओके, सो 2 प्रोटॉन यहाँ पे था ए एंड बी, यू कैन सी 2 सिग्नल यहाँ पे है, एक ब्लू के लिए एक ग्रीन के लिए। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एनएमआर सिग्नल्स में आप ये जो राइट साइड है, इसको हम बोलते हैं ऑफ फील्ड, एंड इसको हम बोलते हैं डाउन फील्ड। ओके, डाउन फील्ड मीन जितना डिसिल्डिंग होगा आप सिग्नल उतना डाउन फील्ड आपका जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जितना सील्डिंग होगा उतना अप फील्ड जाएगा। सो डाउन फील्ड डिसिल्डिंग, ये भी याद रखने के लिए थोड़ा इजी होता है, डी डी है। डाउन फील्ड डिसिल्डिंग मीन आप अगर 3 प्रोटॉन यहाँ पे है, आप देख सकते हो, आपको 3 सिग्नल जो मिलेगा, कैनॉट यू से रिलेटिवली कौन सा सिग्नल अप फील्ड होगा, कौन सा सिग्नल डाउन फील्ड होगा, कैन यू से? सबसे डाउन फील्ड सिग्नल ये होगा ए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड सबसे अप फील्ड कौन सा होगा? सी। अभी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो ना मैं जो बोल रहा हूं? अगर आपको 3 सिग्नल मिलेगा तो सबसे डाउन फील्ड सिग्नल कौन सा होगा? जो सबसे डिसिल्डेड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये आपका रिलेटिव पोजीशन दिखाता है। मैं स्केल में आऊंगा, जब स्केल में आऊंगा तो स्केल में आपको बताऊंगा। बट अभी आप ये समझ लो कि इंटेंसिटी वर्सेस केमिकल, इसको केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, एंड केमिकल शिफ्ट ज्यादा होता है फॉर डिसिल्डेड प्रोटॉन। सिल्डेड प्रोटॉन का जो केमिकल शिफ्ट होता है वो कम होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यहां से एक्चुअली ये जो स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेके नॉर्मली 10 या 12 तक होता है केमिकल शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं, एंड इसको हम डेल्टा मेंशन करते हैं, केमिकल शिफ्ट डेल्टा। ये पीपीएम में होता है, 0 पीपीएम, 1 पीपीएम, 2 पीपीएम, 3 पीपीएम, इट ब्रेक होगा 1 2 3 4 5 6 करके ये 12 तक आता है, 10 12 तक आता है। एंड रिमेंबर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डिसिल्डिंग डाउन माने डाउन फील्ड, जितना आपका डिसिल्डिंग होगा उतना आपका डाउन फील्ड आएगा, मीन्स आपका हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना आपका सील्डिंग होगा उतना आपका अप फील्ड होगा एंड लो फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसलिए मैं वहां पे लिखा था कि डाउन फील्ड डीसिल्डिंग एंड हाई फ्रीक्वेंसी, मीन्स मोर एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर फ्लिपिंग। अप फील्ड सील्डिंग एंड लो फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा ये? यस, Yes, sir. डाउन फील्ड डीसिल्डिंग हाई फ्रीक्वेंसी, अप फील्ड सील्डिंग लो फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको एनएमआर का सिग्नल इस तरह से होता है। तो आपका अभी क्लास होगा ना 12:20 में? यस, विल बी हैविंग क्लास एट 12:20 ना? Sir, maths class, sir. हाँ, मैं देखा था एक्चुअली। सो लेट मी कंसोलिडेट व्हाट वी हैव रेड।
मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि NMR is related to actually nuclear spin states. So any nucleus with nuclear spin quantum number not equal to 0 can be seen in NMR. And proton is one of the example where nuclear spin quantum number is half. And we can see the proton in NMR. So what happens? Proton has two nuclear spin states, plus half and minus half. And these spin states have same energy in the absence of magnetic field. In the presence of magnetic field, the spin states are actually have different energy. Alpha state and beta state are created. So magnetic field actually removes the degeneracy, and you can put a resonating radio frequency to have the flipping of proton. ये हमने देखा. Second thing हमने देखा कि proton is not actually bare. Proton always remains associated with electron cloud around it. So more is the electron cloud, more is the local magnetic field, and less is the field experienced by the proton. तो concept of shielding and de-shielding हमने देखा. So because of the secondary magnetic field of electron cloud, different protons behave differently in applied magnetic field. So depending on the shielding, magnitude of shielding, the magnetic field is experienced and the energy gap is decided. Therefore, different protons have different magnitude of electron cloud and different amount of shielding they experience. Therefore, the energy gap created will be different. And accordingly, the radio frequency required for the flipping will be different. So, एक दो एग्जाम्पल हमने देखा. एक एग्जाम्पल देखा इथाइल अल्कोहल का जिसमें 3 वेराइटी ऑफ प्रोटॉन्स है, and we have seen the magnitude of shielding in them. And another example I have given you that ethyl chloride, where 2 varieties of protons are there. And what we have seen, depending on the shielding, the frequency will be decided and the position of the signal in the NMR spectrum will be decided. तो जितना ज्यादा डीशील्डिंग होगा, सिग्नल का पोजीशन उतना डाउन फील्ड में होगा. तो मैं आपको क्या बोला? डीशील्डिंग डाउन फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी, शील्डिंग आपका अप फील्ड एंड लो फ्रीक्वेंसी. ओके, सो थोड़ा बहुत और चीज है जो कि अनदर 15-20 मिनट्स आई विल टेक. एंड टुमारो योर फ्राइडे टाइम टेबल विल बी फॉलोड. Therefore, at the same time, I will take 1 hour more and I will finish complete NMR and clarify your doubts of spectroscopy. And then in the next week, the last week, I will go through the electrochemistry, the last topic. And electrochemistry, you have read many things in +2, so I think I will be able to complete or finish it quickly. So thank you. Join with me tomorrow. सर नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है सर हमारे में. नानो टेक्नोलॉजी से ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आएगा दिस टाइम. Okay. And I will tell you what portions to read, and only I will take 15-20 minutes to explain the very basics of carbon nanomaterials. You will be expecting short questions. This time कोई synthesis method हम include नहीं कर रहे हैं. ठीक है? So electrochemistry is the major portion, and I think we can very easily cover up in time. Okay, but please join with me tomorrow at 11:20. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.